अच्छा, ये हम कर रहे थे एक और क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट किया, पीपल आर मिसिंग आउट। पता नहीं आप लोगों का क्या प्लान है कि इनका। अच्छा, एनीवे, सो वीव गॉट ये क्या कहते हैं, ये हमने लास्ट टाइम किया था। वी टॉक्ड अबाउट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि हमने पता क्या लगाना था कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और हमने वो डिस्कस किया था कि यू कैन सेट अप इलेक्ट्रोड्स। सोडियम का हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो सोडियम को अगर सोडियम आयंस के सोल्यूशन में डालोगे तो सोडियम जो है ना वो सोडियम आयंस बनाना शुरू कर देगा, बिकॉज इट रियली likes to lose electrons. So there's going to be a lot of electrons that are going to be produced. And because of those extra electrons, there's going to be a lot of negative charge that's going to build up. यहाँ पे negative charge बहुत ज़्यादा होगा, और उस negative potential को आप record कर सकते हो by measuring it with a voltmeter. और उसमें फिर मैंने discuss किया था कि ये endlessly वो हमेशा के लिए electron lose नहीं करेगा. What will happen is that at a certain point, the negative charge वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो वापस आयंस को वापस अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा. So there's going to be a reversible reaction that would eventually be set up. लेकिन वो बाद में आएगा. नेगेटिव चार्ज तब तक बिल्डअप हो चुका होगा, नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा और फिर रिवर्सिबल रिएक्शन सेटअप होगा कि द नेगेटिव चार्ज वुड स्टार्ट अट्रैक्टिंग द पॉजिटिव आयंस बैक अगेन. तो ये एक हमने किया था कि पोटेंशियल बिल्डअप हो जाएगा और पोटेंशियल को मेजर कर लो, और अगर लोअर पोटेंशियल आ रहा है व्हिच इज द नेगेटिव पोटेंशियल, इट वुड इंडिकेट अ स्ट्रांग टेंडेंसी टू एक्चुअली लूज इलेक्ट्रॉन्स. और फिर ये था कि you've got the other situation as well, कि if you have chlorine, तो chlorine gas बीच में डालो, solution में Cl ions डाल दो. अब chlorine has a very strong tendency to actually gain electrons. So what if the substance has a strong tendency to actually gain electrons? तो उसको आपको electrons देने पड़ेंगे, which is why you're going to introduce a platinum electrode, which is an inert electrode. Platinum के पास delocalized electrons होंगे, तो आपका क्लोरीन आएगा. क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का बहुत शौक है, तो वो क्लोरीन प्लैटिनम की जो मेटालिक रॉड है उससे इलेक्ट्रॉन्स बोरो करना शुरू कर देगा, और वो गेन करके इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग Cl ions, बिकॉज क्लोरीन वी नो दैट इट रियली लाइक्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आता रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स गेन करता रहेगा, the metallic rod would become more and more positively charged, and the positive potential would build up. But up to a certain point, एक point आएगा where the positive potential would be so large, वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो positive potential जो है ना वो Cl-1 से electrons वापस खींचना शुरू कर देगा, and that is when the equilibrium would set up. But you can go and measure the potential. It's going to come out to be a very positive potential. So a higher potential indicates the tendency to gain electrons. ये सारा हमने कल किया था. ये clear है? ये सारा clear है? Yes, sir. अच्छा, अब ये है कि अच्छा, अब ये कि अच्छा, the next thing is कि मेन जो आपका पॉइंट था ना वो ये था कि lower potential indicates a tendency to lose electrons, a higher potential indicates a tendency to actually gain electrons. That's the main point. और ये potentials आपको पता लग जाएंगे. और potential से आपको you'll get a lot of information. कि if you have a negative potential, that means जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ना उतना वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना उसको पसंद है. If it really likes to lose electrons, there's going to be a lot of electrons over here, and the potential would be more negative. And if it really likes to gain electrons, if it likes to gain electrons very strongly, the potential would be even more positive. So आपको these values will indicate what the substance would like to do, and these values are relative. All these values
they are relative. So remember, always think of this not in terms of negative and positive, always think of it in terms of lower and higher. अब डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है? डिटेल में ये, the first thing is drawing. Drawing में ये कि how to draw an electrode. You can make many electrodes and there could be many substances. So the first thing is, whenever there's a metal involved, ठीक है, that's the first. So if you have a metal and an aqueous metal ion electrode, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं. So if you have a metal which is in equilibrium with aqueous metal ions, so that electrode, ठीक है, if you have metal and aqueous metal ion, so just 1 second, hold on 1 second. Just a second. अच्छा ये वाला, sorry 1 second, इसको अच्छा ये मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि metal and aqueous metal ions, what happens in metal and aqueous metal ions is कि अगर आपका जो भी आप चीज इन्वेस्टिगेट कर रहे हो ना, it involves a metal, तो the electrode will be made out of that metal. You don't need an electrode. मतलब अगर किसी को electrons चाहिए ना, वो metallic rod से आके ले ले. अगर किसी ने electrons lose करने, तो it will give it to the metallic rod. तो you don't need an extra electrode, ठीक है? कोई बीच में extra बीच में electrode डालने की जरूरत नहीं है. The metal will be, the electrode is going to be made out of the metal. That's it. So that can act as the electrode. और वो जो ions होंगे ना, उनको आप solution में डाल दो, ठीक है? That's about it. And then if the other type of electrode, if what you're trying to investigate involves a gas and aqueous ions, so if it involves gas and aqueous ions, what will happen is कि अब आपको electrode की जरूरत है. Like if the gas wants to gain electrons, where would it gain those electrons from? तो बीच में ना, you would have to add a platinum electrode. ठीक है? So that's the second type of electrode, and the gas would be in a gas jar. So this is the exact diagram that you're going to copy. So that's the exact diagram that you're going to copy. अब फिर एक तीसरे type का electrode है. Let's talk about the third type of electrode. Remember, these drawings are important. They're going to ask you to draw these drawings. So now there's a third type of electrode, and that electrode is, okay, what if I'm trying to investigate this thing? दो ions के बीच में reaction है. Let's say I want to figure out कि भाई Fe3+ है
does it like to gain electrons? And does it like to form Fe2 plus? Or vice versa? Okay, Fe2 plus likes to lose electrons and form Fe3 plus. I don't know at the moment. I don't know what's going to happen. And I want to investigate. I'll उसके potential से पता लगेगा. अगर higher potential आ गया तो इसका मतलब है it likes to gain electrons. अगर lower potential आ गया, that means it likes to lose electrons. But at the moment I don't know what's going to happen. कि ये Fe3 plus electrons gain करेगा या फिर Fe2 plus electrons does it like to lose electrons? At the moment I don't know what's going to happen. So this is the type of electrode where you have aqueous ions only. But there is no gas, there is no metal. You don't have a metal, you have ions only. Aqueous लिख लिया, aqueous ions only. अच्छा इसमें होगा कि आप दोनों आयंस को ना सोल्यूशन में डाल दो. So you're going to add Fe3 plus into the solution and you're going to add Fe2 क्योंकि वो solution में ही होंगे ions in the form of a salt. मतलब हो सकता है FeCl3 हो या जो भी हो. So you'll put both ions in the solution. अब इधर भी आपको electrode की जरूरत है. Like if Fe3 plus really wants to gain electrons, you would have to provide it with electrons. कहाँ से मिलेंगे उसको electrons? तो बीच में ना you would put in a platinum electrode. एक metallic platinum की rod बीच में डाल दो जिसके पास there's going to be delocalized electrons. So if Fe3 plus really likes to gain electrons, तो वो इस metallic rod से आके ना electrons gain करना शुरू कर देगा और Fe2 plus में convert होना शुरू हो जाएगा. तो metallic rod क्या हो जाएगी? It will become more and more positively charged. ये हमने पढ़ा था कि अगर तो वो electron gain करता है तो the electrode would become electron deficient and it's going to give you a higher potential. या फिर vice versa हो सकता है कि the other thing could happen. Like Fe2 plus really likes to lose electrons. तो वो electrons किसको देगा? वो भी platinum की जो rod आपने add की भी है, that is the one. वो electrons जब lose करेगा तो electrons would become part of the platinum delocalized electron cloud and the platinum electrode would become more negative. So whatever happens, whether it gains electrons, whether it loses electrons, a potential would build up on the platinum electrode and that potential will give you an idea of what does it want to do. ठीक है, तो आप उसका ना वोल्टेज जाके मेजर कर लो. And in this case, अगर data booklet देखो ना तो it's going to be 0 point. So this voltage has already been calculated. It's 0.77. It's actually kind of a higher potential. That means kind of a higher potential. Chlorine जितना high नहीं था, लेकिन it's still a higher potential. That means Fe kind of likes to gain electrons, which is why it's going to become more and more positive. Is that clear? Sir, could you repeat again? I didn't understand. नहीं देखो ना ये फिगर आउट करना है ना कि Fe3 plus है और Fe2 plus है, right? हम इन्वेस्टिगेट क्या कर रहे हैं? We want to figure out whether Fe3 plus likes to gain electrons, right? या फिर उल्टा हो रहा है, either Fe2 plus likes to lose electrons, right? Is that clear? मतलब ये पहला टास्क तो क्लियर है ना? Is that clear? Yes, sir. So I'm just trying to make the electrode. How am I going to make the electrode? Because both of them are ions, right? So I'm going to add both ions into the solution. तो मैं कह रहा हूँ कि let's say Fe3 plus, let's assume Fe3 plus has a very strong tendency to gain electrons. Where would that electrons come from? तो वो जो platinum की जो आपने metallic electrode add किया हुआ है, which is an inert electrode, it's got lots of, मतलब metal में क्या होता है? Metal में you have delocalized electrons, right? You have a sea of electrons, right? तो मैंने बीच में platinum की rod डाली हुई है. So let's assume कि Fe3 plus has a very strong, हम यही figure out कर रहे हैं ना कि does it like to gain electrons, does it like to lose electrons? So let's assume it has a very strong tendency to gain electrons. तो वो electrons कहाँ से gain करेगा? Platinum की rod से electrons gain करना शुरू कर देगा. And what would be the charge that's going to build up on the platinum electrode? That's going to be positive, right? Is that clear? It's gaining a positive charge because it's losing its electrons and giving it to iron plus 3. हाँ,
उसको छोड़ दो, Fe क्या कर रहा है? What is Fe doing? I said कि Fe3 plus, let's assume, has a very strong tendency to gain electrons. It's going to start pulling electrons from platinum, right? And what would be the charge that's going to build up on the platinum electrode? It's going to be positive, right? Because it's going to end up losing Yes. electrons, right? Is that clear? Yes, yes. सर हाँ जी. सर सॉल्यूशन में फिर सर वन वे रिएक्शन होगा, दोनों नहीं हो सकते. कौन सा? अच्छा सर हाँ मैं कह रही हूँ कि वो सॉल्यूशन. अच्छा होंगे दोनों ही एंड में, ठीक है. रिमेम्बर मैंने अपने पहले भी किया था कि एंड में इक्विलिब्रियम ही रीच होगा. तो इसी को थोड़ा सा वो और कर लेते हैं कि लेट्स से Fe जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्चुअली गेन इलेक्ट्रॉन्स. तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या चार्ज बिल्डअप होता जा रहा है? राइट, पॉजिटिव. इज दैट क्लियर? और पॉजिटिव चार्ज क्या होता जा रहा है? ज्यादा होता जा रहा है. इट्स बिकमिंग बिगर एंड बिगर, राइट. अच्छा, Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बना क्या रहा है? इट्स टर्निंग इनटू Fe2 प्लस, राइट. सो सॉल्यूशन में देयर इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर Fe2 प्लस आयंस. यहां तक क्लियर है? इज दिस क्लियर? यस सर. Okay, Fe3 plus, if it gains electrons, it's going to end up forming Fe2 plus, right? तो मैंने कहा था ये पॉजिटिव चार्ज एंडलेसली बिल्ड नहीं हो सकता. एक पॉइंट आएगा कि वो पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बिकम सो लार्ज कि वो Fe2 प्लस से इलेक्ट्रॉन्स वापस खींचना शुरू कर देगा. एंड दैट इज द पॉइंट व्हेन इक्विलिब्रियम वुड बी रीच्ड, कि वो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चीजें चल रही होंगी. इज दैट क्लियर? यस सर, इट्स क्लियर. तो बोथ थिंग्स वुड बी हैपनिंग. और उल्टा भी हो सकता है. मतलब इधर तो खैर मैंने पोटेंशियल बता दी है, but the whole reaction could happen in the other direction as well, कि maybe, अच्छा, maybe Fe2 plus has a very strong tendency to actually lose electrons. So Fe2 plus would start losing electrons and will start giving electrons to the platinum electrode. तो अब platinum electrode के ऊपर a negative charge is being built up, and Fe2 plus is coming in, losing electrons, and more Fe3 plus ions are going to be produced. So more and more Fe3 plus ions would be produced. So that negative charge is also not going to build up endlessly. वो one way reaction end तक नहीं होगा. At a certain point, the negative charge would be so large कि वो electrons, they will start attracting or get attracted to the positive ions back again. तो वो electrons फिर वापस Fe3 plus would start gaining those electrons, because there's going to be so many electrons that वो automatically the electrons will get attracted to the Fe3 plus ion, और वो फिर reversible शुरू हो जाएगा. ठीक है. But the thing is, whatever happens, I don't care what happens, कि वो gain करता है, lose करता है, whatever happens, there's going to be a potential that's going to build up on this platinum electrode. And that potential over here will indicate what it wants to do. Is that clear? यस सर. और हमने वो रूल पढ़ा कि रूल क्या पढ़ा था कि अगर तो लोअर पोटेंशियल बिल्ड हो रहा है, that means it really likes to lose electrons. क्योंकि lower negative potential build up क्यों हुआ था? क्योंकि उसने इतने electrons produce किए थे कि a lot of electrons accumulated on the metallic rod and the charge became negative. और दूसरा रूल क्या है? अगर तो उसके ऊपर higher potential build हो रहा है, that means it really likes to gain electrons. यानी वो इतने electrons gain कर रहा था कि metallic rod electron deficient हो गई है, क्योंकि सारे electrons वही gain किए जा रहे हैं. Cl2 आ रहा है, electron gain कर रहा है, so it's becoming more and more positive, so you're going to get a higher potential. ठीक है, so that's the rule. So clear है सारों को ये बात? Yes, sir. तो आपने बस ये रूल याद रखना है, और दूसरे के ड्राइंग किस तरह बनानी है. तो ये तीन इलेक्ट्रोड्स हैं. रिमेंबर देयर गोइंग टू बी 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स. देयर इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रोड दैट वुड इन्वॉल्व अ मेटल एंड एन एक्वस मेटल आयन. जिस तरह अगर आपने सोडियम को इन्वेस्टिगेट करना है ना, कि सोडियम आयंस बनाना चाहता है या सोडियम आयन सोडियम बनाना चाहता है, इफ यू वांट टू इन्वेस्टिगेट दिस थिंग, तो अगर आपने मेटल और एक्वस मेटल आयंस को इन्वेस्टिगेट करना है, तो what will happen is कि आप मेटल को ना एज इलेक्ट्रोड यूज करोगे और आयंस को ना आप सोल्यूशन में डाल दोगे.
और फिर वेट करोगे भाई कि पोटेंशियल क्या बिल्डअप होता है, ठीक है। Second type of electrode, if what you're trying to investigate involves a gas, कि let's say Cl2 gas ions बनाती है या फिर ions Cl2 gas बनाती है, does it gain electrons, does it lose electrons, if you're trying to investigate that, and one of them is a gas and the other ones are aqueous ions. तो gas जो होगी that's going to be in the gas jar, the ions would be in the solution, और बीच में you'll put a platinum electrode. Whatever happens, there's going to be a potential that's going to build up on the voltmeter. और तीसरे टाइप का इलेक्ट्रोड जो है that is the one that only has aqueous ions, यानी whatever you're trying to investigate, whatever you're trying to investigate, it only has ions. Like you are trying to investigate कि भी Fe3 plus wants to gain electrons or Fe2 plus wants to lose electrons. What you're going to do is you're going to dump both of them into this solution, ठीक है। तो and you would need a platinum electrode. If it wants to gain electrons, so you need a source of electrons. Where would it gain electrons? So you'll put in this electrode. और जो भी होता है इनके बीच में, the potential would build up on this platinum electrode and you'll find out what the potential is. ठीक है? Is this clear? ये 3 types के electrode. Is this clear? Yes, sir. अच्छा, तो अब मैं वो खोल लेता हूँ कि where's the data booklet. Remember ये अब टेबल जो है ना आपको क्वेश्चंस के साथ ही होगा, ठीक है? There's not going to be any separate data booklet. It will be given with the question. अच्छा, डेटा बुकलेट में ना ये सारे पोटेंशियल्स गिवन है. So I'm just going to pick a random, क्योंकि ड्राइंग का क्वेश्चन, so I'm going to pick a कोई रैंडम चीज पिक कर लेते हैं कि let's say this one, ठीक है. Let's say we take this electrode, मतलब ये इन्वेस्टिगेट करते हैं और मैं इसकी ड्राइंग बनाता हूँ. तो so the thing is, he's asking, will water like to gain electrons to form H2 and OH ions, or will H2 and OH ions lose electrons to form water? अब इसमें एक गैस आ गई है, राइट, एंड देयर इज नो मेटल. तो मुझे तो इलेक्ट्रोड किस चीज का बना होगा? फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रोड किस चीज का बना होगा? Platinum. ठीक है, सो यू गोइंग टू यूज अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग. तो ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, यानी जिसने भी इलेक्ट्रॉन गेन करना है, जिसने भी इलेक्ट्रॉन लूज करना है, वो प्लैटिनम को देगा, ठीक है. अच्छा, फिर द आयंस वुड बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. तो मतलब ये नीचे क्या होगा? देयर इज गोइंग टू बी वाटर भी यहाँ पे होगा, राइट, एंड OH आयंस भी आप यहाँ पे डाल दोगे. और हाइड्रोजन गैस कहाँ से आएगी? हाइड्रोजन गैस के लिए you would need a gas jar for hydrogen gas. तो ये आपके ना सारे वो रिएक्टेंट्स और मतलब जो भी है ना, इन सारों को मिक्स कर दोगे, ठीक है, ऑल ऑफ देम. तो वाटर भी बीच में डाल दिया. वाटर तो ऑब्वियसली वैसे ही होगा. रिमेंबर, वाटर हमेशा बाय डिफॉल्ट वैसे ही होता है, ठीक है, हर जगह. OH आयंस डाल दिए उसमें. हाइड्रोजन गैस ऊपर से गैस जार से आ गई है, ठीक है, और बीच में यू पुट अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. And you have to do what you have to do is you have to measure the potential of this. मतलब जो भी potential build up होता है ना, that is going to be measured. ठीक है, उसकी वोल्टेज आप मेजर कर लो और आपके पास, so that's how your electrode would look like. और इसको लेबल किया हुआ है platinum electrode, right? And the potential that's going to build up would be -0.83. So what does that indicate? मतलब इसकी वैल्यू देख लो, बस नेगेटिव है. What does that indicate? Backward? Does it want to lose electrons? Does it want to go backward or forward? किसकी टेंडेंसी ज्यादा है? Forward. नहीं, पहले तो बताओ कि लोअर पोटेंशियल का क्या मतलब होता था कि डज इट लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और डज इट लाइक टू गेन इलेक्ट्रॉन्स? Lose electrons. So backward. हाँ, बैकवर्ड. सो नेगेटिव पोटेंशियल बिल्डअप ही हुआ है कि द रीजन इज यू गेटिंग अ नेगेटिव चार्ज हियर इज कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए इसके ऊपर. सो दैट मींस इट रियली लाइक्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, बट इट वांट्स टू गो in the backward direction, wants to lose electrons, doesn't want to really gain electrons. तो इसलिए इसके ऊपर ना नेगेटिव पोटेंशियल बिल्डअप हो रहा है. तो हमें इस रिएक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि भाई ये क्या करना चाहता है. लेकिन रिमेंबर, इसकी वैल्यू को खाली देख के नहीं करना. इट्स ऑलवेज अ रिलेटिव कंपैरिजन. यू कंपेयर इट विद समथिंग, ठीक है. वो हम उस बाद में आएंगे. एक और एग्जांपल कर लेते हैं क्विकली कि वी हैव वेयर इज द डेटा बुकलेट. कोई और
इसी तरह कर लेते हैं कि टिन का कर लेते हैं कि somebody did an experiment जहां पे टिन अच्छा ये वाला. So somebody was trying to figure out whether tin 4 plus wants to gain electrons or tin 2 plus wants to lose electrons. अब मुझे बताओ, what will the electrode be made up of? Tin, the metal. नहीं, remember there is no metal here. Ions है. मतलब tin tin तो है ही नहीं. ठीक है, is that clear? मतलब tin metal की Yes, बात. sir. तो मतलब there is no metal. ठीक है, there is no metal है. Ions है उसके, लेकिन metal नहीं है. तो बताओ कि what would you make the electrode out of? Platinum with a solution of Sm plus 4 and Sm plus 2. ठीक है, exactly. और उन दोनों को ना you'll put them in the solution. उनकी salts वगैरह जो भी है ना, tin 4 plus would come from somewhere. Tin 2 plus will be added. ठीक है. And whatever they like to do, whether they like to gain electrons, they like to lose electrons, the potential would build up on the platinum electrode, and all you have to do is you have to measure the voltage. That's it. And the voltage is coming out to be 0.15. So remember, I told you it's a relative comparison. So अगर मैं इन दोनों का comparison करूं, तो this one has a higher potential compared to this one. So remember, it's always going to be a comparison. जब हम बात करते हैं कि somebody is tall, तो it's always against a reference point. Like taller than who? Taller than an NBA basketball player, या taller than an average person, या taller than 5 feet, या तो मतलब what does tall mean? ठीक है. So similarly, potentials का भी यही है कि I mean, this one is a positive potential compared to this one. यानी इसका मतलब है कि this has a greater tendency to actually gain electrons compared to this one. यानी अगर इन दोनों का मुकाबला होगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ठीक है. इज दैट क्लियर? दिस वन. Sir, why do we need to compare them relatively? क्योंकि ऑब्वियसली रिएक्शन होगा. अगर मैं लेट्स से टिन 4 प्लस डाल दूं हाइड्रोजन गैस और OH आयंस के साथ, तो मैंने रिएक्शन प्रिडिक्ट करना है कि क्या होगा. मतलब आगे जाके तो हमने रिएक्शन प्रिडिक्ट करना है ना, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. राइट. तो वो हमें पोटेंशियल्स बताएंगे. भाई ये इलेक्ट्रॉन, ये हायर पोटेंशियल है, it wants to gain electrons, and this is the lower potential, it wants to lose electrons. Is that clear? Sir, तो ये दोनों reactions एक ही solution में आ रहे हैं? नहीं, वो भी हम करते हैं. अभी हम उस पर आते हैं. अभी तो हम अलग अलग कर रहे हैं ना. एट द एंड ऑफ द डे तो दोनों को फिर कंपेयर, मतलब एट द एंड ऑफ द डे तो हम फिर क्या करेंगे, दोनों को आपस में रिएक्ट करेंगे. अभी तो हम ये पोटेंशियल्स फिगर आउट कर रहे हैं. अभी तो हम इंडिपेंडेंटली फिगर आउट कर रहे हैं कि किसका क्या पोटेंशियल है. लेकिन बात समझ आ रही है. बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे हमने फिगर आउट करना है कि अगर मैं Na और Sn2 प्लस को मिक्स कर दूं, राइट, तो कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इन दोनों में से, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो किस तरह पता लगेगा? वो इन पोटेंशियल से पता लगेगा. ठीक है. इज दैट क्लियर? तो उस पर हम बाद में आते हैं. ठीक है. अभी तो खैर ड्राइंग के ऊपर ही रहते हैं. ड्राइंग क्लियर है सारों को? ड्रॉ किस तरह करना है? 3 टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स हैं. ठीक है. ये क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब ये कि सेकेंड. अच्छा, अब ये कि वो अच्छा, ये 2 खदीजा कौन है? एक खदीजा विद डबल ए. जो बाद में देख लेंगे. अच्छा, अब एक बस आखिरी जो चीज है ना, वी जस्ट हैव 2-3 मिनट्स. ये क्या चीज है? ये व्हाट इज दिस? वोल्टेज जब मेजर करते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज दिस थिंग? हमारी अभी ड्राइंग कंप्लीट नहीं हुई. ठीक है. वी जस्ट डिड हाफ द ड्राइंग. ठीक है. अब फिगर आउट करना है व्हाट इज दिस, कि ये क्या चीज है. तो रिमेंबर, वो जिस तरह मैंने कहा था ना कि बिल्डिंग की हाइट्स मेजर करते हो, तो यू नीड अ रेफरेंस पॉइंट. कहां से मेजर करते हो? कि
मतलब अगर आप अपनी हाइट मेजर कर रहे हो तो आप कहाँ से मेजर कर रहे हो? यू नीड अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब आप सी लेवल से अपनी हाइट तो नहीं मेजर कर रहे, या आप अपने नीचे जो जमीन है उधर से मेजर कर रहे हो। यू नीड अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है? यू नीड अ पॉइंट ऑफ कंपैरिजन एंड दैट पॉइंट शुड बी द सेम। अच्छा, व्हाट हैपेंस इज कि the voltages are measured with reference to something, and this is that reference. But what is this? ठीक है, that's the question. कि अगर हम कहते हैं ना कि 10 is 0.15 volts, that means it has a higher potential, like it's plus 1.15 compared to something. जब हम कहते हैं ना कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना इसका पोटेंशियल -0.83 आ रहा है, so it's -0.83, it's a negative potential compared to something. So there needs to be a reference, there needs to be something that is being compared. mass जब measure करते हो तो आप kg का weight use करते हो, उसके comparison में आप mass measure करते हो, ठीक है? तो you need a reference thing. So what happens is कि आपके पास ये सारे इलेक्ट्रोड्स हैं, आप क्या करते हो कि इनमें से एक इलेक्ट्रोड यूज करते हो, उसको एज अ रेफरेंस यूज करते हो, और वो इलेक्ट्रोड ना ये वाला है, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है? यू यूज दिस इलेक्ट्रोड, उसको आप 0 वोल्ट असाइन कर देते हो। जैसे अगर आप हाइट मेजर कर रहे हो ना, लेट्स से ग्राउंड आपका रेफरेंस है, तो ग्राउंड की हाइट क्या है? वो 0 होगी। अगर आप हाइट मेजर कर रहे हो किसी माउंटेन की और सी लेवल को आप एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हो, तो सी लेवल की हाइट क्या होगी? वो 0 होगी। तो द रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू हैव, मतलब जब आप पोटेंशियल्स मेजर कर रहे होगे तो जिसको यूज कर रहे होगे टू मेजर द पोटेंशियल्स ऑफ ऑल द अदर सब्सटेंसेस, दैट इज गोइंग टू बी 0। तो आप इन सारे इलेक्ट्रोड्स में से ना यू पिक वन इलेक्ट्रोड एंड, और ये कन्वेंशनली स्पीकिंग एवरीवेयर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे ना आप हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड यूज करते हो, उसके साथ कंपैरिजन करते हो कि भाई ये जो electrode है ना, this has a higher potential compared to the hydrogen electrode, this one has a lower potential compared to the hydrogen electrode. So all of these potentials that are measured, these are measured against the hydrogen electrode. अगर ये plus 2.87 आ रहा है ना, इसका मतलब है it's plus 2.87, it's got a higher potential compared to the hydrogen electrode. If this one is coming out to be minus 2.92, that means it's a negative minus 2.92 potential compared to the hydrogen electrode. ये बात clear है? Is this clear? Yes, sir. तो अब मैं ना बस वो जल्दी से डायग्राम कंप्लीट कर लूं। तो बेसिकली ये जो ग्राउंड में बना रहा था ना, व्हाट इज दिस इज एक्चुअली अनदर इलेक्ट्रोड, और हर दफा वो वही इलेक्ट्रोड होगा, उसमें हाइड्रोजन गैस है तो इसलिए आई नीड अ बीकर, और हाइड्रोजन आयंस हैं वो सोल्यूशन में होंगे, ठीक है? और यहाँ पे ना देयर इज किधर चला गया? अच्छा यहाँ पे, अच्छा सो, और बीच में देयर इज गोइंग टू बी अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड बिकॉज़ ऑब्वियसली देयर इज नो मेटल, so there's going to be a platinum electrode. तो यहाँ पे मैं इस चीज को हटा रहा हूँ and I'm going to connect it with this, ठीक है? That's how the potentials will be, so that's how the potentials will be measured. और इस this one जिसको आप reference use करो, that is assigned 0 volts, you never measure that potential, और इसका potential is coming out to be plus 0.15. So the voltmeter is showing a reading of 0.15. That means a positive 0.15. That means this has a higher potential compared to this one. So is this clear? कि हर दफा the reference electrode is going to be this one. Is this clear? Yes, Yes, sir. sir. और इसको ना वो बस टाइम कम है, चलो बस अब खत्म ही करें ये, फिर अगली क्लास में एक और चीज याद रखना कि दिस गोइंग टू बी, ये सॉल्ट ब्रिज वाली बात भी ना मैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। रिमेंबर ड्राइंग्स आर इंपॉर्टेंट। ये जो पूरा जो ये हमने बनाया ना, इट्स नॉट गोइंग टू गेट कंप्लीटेड अंटिल यू हैव अ सॉल्ट ब्रिज। इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलिए, लेट्स कंटिन्यू टुमारो। चलिए, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।